Hello, today I am going to discuss the first story for the first year Arts, Science and Commerce students of CHSC Orissa. Now I know the admission process is going on and it will be completed within a month or so, and before that, before you go to purchase books for your classes, and you will find my help ready for you. And when you will be taught different lessons such as the grammatical items, I have discussed articles and modals. If the first poem is taught in the class, you will find my poem Stopping by Woods on the Snowy Evening. And here again, today I am going to discuss the first story written by Leo Tolstoy, a famous Russian writer of stories, novels and plays. And the name of the story is a very interesting story, and we have to learn several things from the story at your age. It is very important for you. The name of the story is Three Questions. Now, the question arises, what is that? Why do we ask questions? आमे प्रश्न कहीं पचारती, तार उत्तर होउची we are inquisitive, we want to learn more, there are some problems which cannot be tackled by ourselves, we want to get the advice, the suggestion, the answer of our seniors, our elders, our teachers. And if you have no sense of inquisition, if questions do not arise in your minds, definitely you cannot learn many more things. And here in the story, three questions very important, not only for the students of first year, but also for each and every one of us. It is very important. These three questions are very important because these are very crucial in our lives. What are the three questions that are cropped up in the mind of a king? You see, when we are talking about a king is not a pupil, a king is not a teenager. Definitely a king is an adult person, a matured man, and inspired being an adult, inspired being a king, three questions came to his mind. And in the first unit, I will discuss in detail what were the three questions that came to the mind of the king, what he himself could not solve, what his subjects, the men of his kingdom, could not solve. What were the questions? Now, there came to the mind of a certain king. We do not know exactly the name of that king. The name of the king is not given, only the questions are mentioned. What were the three questions? Number one, the king wanted to know the right time to begin any work. I am repeating, the right time to begin any work. And we know we cannot survive even for a second without work. So long we are working, we are alive. The moment we stop working, we are dead. Now, most of us do not know the right time to start any work. Number one question, remember it. Number two, who were the right men, important men for the king, who were to be consulted and who were to be ignored, not to be consulted. It is also important for us.
Sometimes we mix and mingle, we cultivate friendship with some people, those who are very harmful to us, those who are not like-minded, those who are not true friends, those who are not our guides, but for the sake of fun, for the sake of entertainment, we become friendly with them and we give importance to them. We have to know who are the right persons to us. Number 3, what was the right work, right profession, right duty for the king? We are doing many things, we are doing many works. Sometimes some works are harmful to us, they make us lose our faces, and they make us infamous, notorious, and sometimes some well thought works make us popular, make us well known, give us respect, so on and so forth. ये जो तीनोटी प्रश्न राजा मन में आसी, प्रथम है जे कौन कार्य आरंभ करने उपयुक्त प्रकृष्ट समय केउटा, तामाने यदि आमे को कामटा को समय करने कथा न जानिबा तामाने आमे कौन हम सिंपली इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम, समय केवल अपचय हम, समय बर्बाद हम, एनर्जी लॉस हम फॉर नथिंग। तेणु जेकोसी काम करने उपयुक्त समय राजा जी जाना दरकार, आम समस्त सेटा जाना आवश्यक। सेकेंड थिंग आम कौन कर ना राजा जाना को चाहूले क्यों लोक तांको गुरुत्वपूर्ण आ क्यों लोक तांको गुरुत्वहीन, क्या सहित से बंधुता रखिए, क्या को से भूली जाए, मिसापी प्रश्रय देवे ना। आमे सेमती अधिकांश समय कौन करती ना जो लोक मैंने आम जीवन पथरे सहायक नुहति, आमर शिक्षापी, आमर दीक्षापी, आमर कर्मपाई, आमर ख्यातिपाई जो मैंने आमर साहाय्य करती ना, अन्य पक्षरे जो मैंने आमर क्षति चाहती, आमको खाले पकाती, आमर चरित्र, आमर माने ख्याति जश सबकिछि से माने बर्बाद करने को चाहती, आम से सहित मिशंती। तो आम शिखा कौ लोक सहित आम मिसवा दरकार, कौ लोक सहित आम निकटतर हवा दरकार, आउ कौ लोक दूरे रहा दरकार। थर्ड थिंग जोटा कि राजा जाना को चाहूले आम जाना आवश्यक, आम कौ काम आम गुरुत्वपूर्ण, कौ काम आम करवा उचित आउ कौ काम करवा उचित नुहे, तामाने कौ कामटा कौ समय करवा दरकार आउ कौ लोक आम गुरुत्वपूर्ण। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस। द किंग वेंट ऑन pondering thinking and thinking but could not find any answer। राजा निजे चेष्टा करे, भाविले, चिंता कले, किंतु तार कौन उत्तर मन को आसला नहीं। एंड thereafter the king announced in his kingdom that anybody who gave him the right answer, satisfactory answer to his questions, he would be given huge reward, handsome reward। राजा घोषणा करे राज्य रे जो व्यक्ति तीनोटी प्रश्नर सठिक उत्तर देवे, राजा तांको यथेष्ट पुरस्कार देवे। एंड यू सी बिकॉज द किंग declared a great reward for the answers to his three questions, so many people, those who were wise and those who claimed to be wise, rushed to the palace of the king and they tried to suggest answers to these three questions। तेणु ये जो पुरस्कार लोभरे राज्य रे जेते सब ज्ञानी लोक थिले आ जो लोक माने निजको ज्ञानी बोली भावंती, पंडित बोली भावंती, से माने मध्य आसिले राजा को उत्तर देले। एंड यू सी लेट मी टेल यू वन थिंग, answer
must be 1. If the answers differ, you must take it for granted that most of the answers are incorrect, only one answer is correct. जदि गोटे प्रश्नर विभिन्न उत्तर आसला तुम से भावी नब जे से विभिन्न उत्तर भितर हुए तो गोटे ठीक सबुजाक भूल किंबा सबुजाक भूल कोटा ठीक नहीं. And those who are reading mathematics and you know the answer of any problem, mathematical problem is 1, not many. And similarly, the wise men, those who came to the palace of the king, to the court of the king, to give their valuable answers, they also differed in their suggestions, their replies, their answers. जो लोक मैंने आसिले राजा को प्रश्न उत्तर देवाई समस्ते उत्तर क्षेत्र में प्रश्न गोटे आंसर किंतु विविधरा मेनी हो गला. टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन एनी वर्क. एंड दोज हु रश टू द पैलेस ऑफ द किंग, सम ऑफ देम advised the king to keep a diary, to take down the dates, the year, the month, the hour, the second of the year before commencing any work, and he should not leave any work unattended. He must strictly follow the calendar, the plan of action, pre-plan action prepared. आम जमी घरे गोटे सब कैलेंडर रखुं, कैलेंडर अनुसार आम कौ तिथि बार कौटा शुभ मुहूर्त कौटा अशुभ मुहूर्त कौ बार शुभ कौ मास शुभ ये सब जो देखुं. तेणु केतेक विज्ञ लोक राजा को परामर्श देले जे आपण वर्षर जो प्रत्येक जो दिन गोटे टेबुल तैयारी करंतु, गोटे सारणी गोटे तैयारी करंतु, तार डे थिबो, डेट थिबो, टाइम थिबो, मंथ थिबो, ईयर थिबो. आउ से जो कैलेंडर आप करेंगे, जो माने टेबुलटा प्रिपेयर करेंगे, चार्टटा प्रिपेयर करेंगे, यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो इट, एडहियर टू इट. आप पूरापूरी माने स्ट्रिक्टली कड़ाकड़ी भाव में से कैलेंडर को फॉलो करंतु. कौन सी काम को माने खराब बा कौन सी काम को लेस इंपोर्टेंट भाविक छाड़ू ना. डू एवरी वर्क. वन आंसर. एंड another wise man advised the king to not to pass time lethargically, busying himself in enjoyment, rather to attend each and every work quite sincerely, and to find out what was most needful, what was most necessary for him. आउ जड़े विज्ञान कहले राजा आप भाविबे कोटा आपण पाई दरकार कोटा अदरकारी, आ जोटा आपण भाविबे आपण पाई दरकार सेही कामटा करंतु. एंड फॉर दैट मैटर यू हैव टू बिकम विजिलेंट. तमें यदि अलसुआ हो जीवो सब बड़े एंजॉयमेंट, साधारणतः राजा मैंने कौन करती, दे रिमेन बिजी इन एंजॉयमेंट, ड्रिंकिंग, वाचिंग डांसेस एटसेट्रा एटसेट्रा. तेणु आपण निजको आलस्य परायण न करी केवल विलास व्यसन में मजी न रही आपण कौन करेंगे, सब बड़े लक्ष्य रखुए आपन कौ कामटा आपण भाई गुरुत्वपूर्ण कोटा नुहे. एंड व्हाट एवर यू थिंक राइट एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू, अटेंड दैट वर्क, डू दैट वर्क एट दैट टाइम. And came the third group, those who advised the king to take the suggestion, the advice of some wise men, council of wise men, wise ministers. आउ दले आसिर करे महाराज आपण आपण राज्य जो सब विज्ञ लोक अच्छा, गुणी ज्ञानी लोक अच्छा, गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बा काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स करंतु, वाइज मैन करंतु, से परामर्श अनुसार काम करंतु. एंड द लास्ट ग्रुप
suggests the king to consult magicians, because without magicians, without witchcraft, without any charm, we cannot know what is going to happen in future. To know the importance of a work in future time, we have to consult the prophets, the philosophers, the magicians and the men of black art. तेणु भविष्य में कौटा आम गुरुत्वपूर्ण हम, कौटा गुरुत्वपूर्ण हेनी, कौटा आम भल, कौटा भल हम ना, यहीटा को आम जापर नहीं। तेणु आपण राज्य सब किसी गुणी मानक रखु, मैजिशियन मानक रखु, जो मैंने आपको परामर्श देवे एंड अकॉर्डिंगली यू विल अंडरटेक दैट वर्क एट दैट राइट टाइम। तेणु कौ समय कौ कमटा करा पड़ो, आपण गुणी मानक द्वारा, आप विज्ञ लोक मानक द्वारा, कि निजे गोटे टेबुल ऑफ डेज एंड डेट्स रखिए, ये सब को फॉलो कले आप राइट टाइम जापर। नाउ सिमिलरली द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द किंग was also equally varied. राजांकर जो द्वितीय प्रश्न कौन, हु were important for him and who should be consulted and who should be ignored. राजांक पई को लोक माने आवश्यक गुरुत्वपूर्ण आउ को लोक मान को से अणदेखा करेंगे, ताको इग्नोर करेंगे, ताको गुरुत्व देवे ना, ताने इम्पोर्टेंट पीपुल फॉर द किंग। तेणु ये द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन वे ऑल्सो 4 in number, varied in number, different number. Some people, some wise men advise the king to appoint council of wise men or ministers, and these councillors, his ministers, were important for him. केतेक विज्ञ लोक कहले आप गोटे मंत्री परिषद गठन करूँ कि गोटे गुणी ज्ञानी लोक मान परिषद गठन करूँ, से ज्ञानी गुणी लोक आपण गुरुत्वपूर्ण। ताने ओनली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ वाइज मेन, दे शुड बी गिवेन सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस बाय द किंग, एंड अदर ऑर्डिनरी citizens, other subjects should not be given importance. And another group said, as you are old, as you are religious minded, as at an old age people worship gods and goddesses, read religious scriptures, therefore priests are important for you, not others. जेहेतु आप जड़े वयस्क बुढ़ा लोक माने बयस अधिका है, आप बर्तमान धर्म करेंगे, माने शास्त्र पुराण पढ़े, पूजा पाठ करेंगे, तेणु आपण कौन विद्वान लोक, कौन पंडित लोक, कौन मंत्री आपको दरकार नुह, आपण दरकार केवल जो मैंने पूजारी जो मैंने से मैंने आपण गुरुत्वपूर्ण. एंड सम अदर्स ऑल्सो एडवाइज द किंग that you are quite old, and at an old age you are prone to fall sick frequently, therefore instead of consulting your counselors, consulting your priests, better give importance to doctors, because doctors will save your life, give you good health. आपण कौन पूजा पाठ, कौन पूजक, कौन मंत्री परिषद से माने आपण भाई गुरुत्वपूर्ण हंती, को माने ना डॉक्टर माने आपण भाई गुरुत्वपूर्ण. आओ लास्टली द आंसर केम, बिकॉज यू आर ए किंग, यू नीड टू एक्सपांड योर किंगडम, देयरफॉर वॉरियर्स, फाइटर्स, सोल्जर्स, दे आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू देन डॉक्टर्स, प्रीस्ट्स एंड काउंसिलर्स. आपण राजा राज्य जो करिया आपण आवश्यक, साम्राज्य विस्तार करिया आवश्यक, तेणु आपण भाई योद्धा माने होचंती अधिक गुरुत्वपूर्ण. एंड सिमिलरली टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट वर्क, व्हाट इज राइट वर्क, राइट प्रोफेशन, राइट ड्यूटी फॉर द किंग. राजा कौटा गुरुत्वपूर्ण कर्म, राजा कौ कर्मटा को गुरुत्व देवे, कौ कर्मटा को गुरुत्व देवे नहीं. तो ये सेमती सजेशन आसला, आंसर आसला कौन ना, नंबर 1 you should give more importance to scientific work for the development of science, progress of science in your kingdom,
you have to give more emphasis to science and its propagation. And another group said, as a king you have to go for warfare, give more importance to wars and fights. आपण राजा हिसाब रे युद्ध को गुरुत्व देवा दरकार. युद्धर गोटे काम, राजा काम हो युद्ध जय करवा. वारफेयर मस्ट बी गिवेन मोर इम्पोर्टेंस. एंड सम अदर said that you should give more importance to religious worship. खाली विज्ञान हेले हम नहीं, खाली युद्ध जय कले हम नहीं, राज्य जय कले हम नहीं. आप कौन कर पूजा पाठ ऐसो करिया को पड़ो. तेणु यू सी 3 questions 11 answers, and I have told you if the question is 1, the answer must be 1. For 3 questions right answers must have been only 3. The king was confused. The king could not accept anybody's suggestion, anybody's answer, and without giving anybody any reward, the king simply drove them away from his palace. No, your suggestion, your solution, your advice is not acceptable to me. Better leave me alone. आपण मानकर उत्तर मते संतोष दो नाही, मु सैटिस्फाइड नुहे. तो आपण माने चली जानतो. लेट मी फाइंड आउट माय ओन आंसर. And in the meanwhile, the king came to know that a certain hermit was living in a dense forest, and he was renowned for his wisdom. Everybody acknowledged him. Everybody admitted that the hermit, the sage, the saint living in a forest was wiser than all the people, those who claimed to be wise and those who came to the palace to give him advice. तेणु जड़े सन्यासी जे कि घंच जंगल बास करती, फार अवे फ्रॉम दि किंगडम ऑफ द किंग, जहाँकि समस्ते स्वीकार करती जे से सन्यासी होती समस्त अधिक विद्वान, अधिक विज्ञ, वेरी वाइज, आउ से तांकर विजडम पई, तांकर ज्ञान पई सर्वजन विदित. नाउ द क्वेश्चन अराइज द and again one thing, this hermit never entertained any well-to-do people, never entertained any high-ranking people, those who belong to the higher strata of the society. ये जो सन्यासी जे कि जंगल रहती, जे कि चाकचक्य ठारू दूर रे कौन सी गुरुत्वपूर्ण लोक, धनी मानी लोगों को से प्रश्रय दियंती नहीं, कथबार्ता करती ना. तेणुक नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द किंग इनवाइटेड द हर्मिट टू हिज पैलेस और arranged for some alternative to meet the hermit in his own cottage, in his own hut or not. Now with this, let me stop my discussion here. The first unit is over. In the next episode, please wait and see how the king got his answers. Thank you all.